अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपका ख्वाजा मोइनुद्दीन। आज हम लोग फ़िश ग्रेवी करी बना रहे हैं, वो भी पंजाबी स्टाइल में। जी हाँ, बहुत ही डिफरेंट रेसिपी है और बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। चलिए देखते हैं नवाब्स किचन के स्टाइल में कैसे बनाते हैं। आज हम लोग पंजाबी स्टाइल में फ़िश ग्रेवी करी बना रहे हैं। उसके लिए पहले हम लोग टमाटोस और आनियंस को अच्छी तरह पका लेंगे। पहले इसमें ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल गर्म हो गया है, इसी में हम लोग फाइनली चॉप्ड ऑनियंस ऐड करेंगे। ऑनियंस थोड़ा सा नरम पड़ते ही हम लोग इसमें स्लाइस्ड टमाटोस भी ऐड करेंगे। टमाटोस और ऑनियंस अच्छी तरह पके तक हम लोग फिश पीसेस को मैरिनेशन करेंगे। चलिए, मैरिनेशन के लिए पहले हम लोग फिश पीसेस को इसमें ऐड करेंगे। मैरिनेशन के लिए पहले हम लोग इसमें टर्मरिक पाउडर ऐड करेंगे। टर्मरिक पाउडर के साथ साथ हम लोग इसमें रेड चिली पाउडर और सॉल्ट भी ऐड करेंगे। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट जिंजर गार्लिक पेस्ट। इन सारे इंग्रेडिएंट्स के साथ साथ हम लोग इसमें कोरिएंडर पाउडर और क्यूमिन पाउडर भी ऐड करेंगे। नेक्स्ट हम लोग इसी में लेमन जूस भी ऐड करेंगे। स्पाइसीनेस के लिए मैरिनेशन के वक्त ही हम लोग इसमें फाइनली चॉप्ड ग्रीन चिली ऐड करेंगे।
सारे फिश पीसेस पे मसाले अच्छी तरह अप्लाई करे तक मिक्स करे बाद हम लोग 30 मिनट तक इसको मैरिनेशन के लिए रखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस देखेंगे। टमाटोज और ऑनियंस को पेस्ट करे तक हम लोग फिशेस को ऑयल में फ्राई करेंगे। पहले इसमें ऑयल ऐड करेंगे। अगर आप चाहे तो टमाटोस और ऑनियंस को पेस्ट करके भी इसमें ऐड कर सकते हैं, लेकिन हम लोग थोड़ा सा स्टाइल चेंज करके इसमें टैमरिंड जूस भी ऐड करके इसी मिक्सचर को हम लोग वो फिशेस जो हाफ फ्राई हो रहे हैं उसी में ऐड करेंगे। पंजाबी स्टाइल में फिश मसाला ग्रेवी परफेक्टली बन गया है। फाइनली इसमें हम लोग कसूरी मेथी के साथ साथ गरम मसाला भी ऐड करेंगे। माशाअल्लाह, रेसिपी तो परफेक्टली बन गया है। देखते ही उसको जो खुशबू आ रही है वो फील करे तो समझ में आ रहा है कि कितना मज़े का बना है। इमीडिएटली हम लोग पैक करेंगे, राइस के साथ नीडी पीपल को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। चलिए।
ये वीडियो देखते ही अपने दोस्तों को और रिश्तेदारों को शेयर करना ना भूलें और नेक्स्ट वीडियो अपलोड होने तक हमारे टीम के लिए दुआ करिए। अल्लाह हाफिज़।